Hello everyone, welcome to my classes. I am Nayak from Mechanical Department at Vedang Institute of Technology. After a very long period of time, I am going to give the classes due to certain issues. But now there is the continue of classes will take place. As you all know, under my classes in automobile section, there is a sub-section transmission system is going on. In the transmission system, there is a number of gear system that I already discussed, but they are all manual gear system. In manual gear system, what happened? There is a clutch, there is a gear. The gear and clutch simultaneously they work, they control with each other, for which the vehicle get moved smoothly. But one of the disadvantage I already told in my previous classes in manual transmission system is that there is more number of wear and tear takes place, and the driver which is get propelled the vehicle always have the idea, always have the conscious mind about the gear and the clutch system. That means if there will be an automatic system, if there is no clutch, only you put a no gear, only the vehicle will move by means of controlling the accelerator. It will be very much easy for the driver also. The wear tear also decreases, as well as the most important thing is that the accident case also decreases because the way of driving the vehicle, the different type of system of driving the vehicle, that is one of the most biggest disadvantage. Means we have to make a clutch as well as the gear system simultaneously when they're driving. So if you just remove that system and implement a new system as automatic, we only use the accelerator for the propulsion of the vehicle, which is one of the most advanced gear system, which is used in day by day rapidly in different type of industries, automobile industry mainly, which gives rise to a global helpful to all the feasibility of propelling of the vehicle. And the most important thing is that this type of gear which is used for this automatic system is this epicyclic gear. Today in our classes we are discuss about this epicyclic gear. It's under the transmission system of automobile. So as you able to look this type of pictures, it is not a picture, short an animation, it is short animation. This type of gear is actually working in the automobile to make it a automatic transmission system. This gear is known as epicyclic gear. If one or more number of gear get attached in this system, they become the epicyclic gear system. Actually, in the practical practice, there is not a single gear in the vehicle. There is more number of gear is attached in a series to become a feasibility of the working, and that is known as epicyclic gear system. In the epicyclic gear system, I am taking a certain part of the gear. It is a single gear, where we are going to be discuss about this gear in these classes. In epicyclic gearbox, mostly widely used within automobile section that I already told. We don't have any type of clause or gearbox lever or gear lever in this vehicle. What are the equipments present in epicyclic gear? In epicyclic gear, there is a mainly three equipments or arrangement are there. One is swan gear, another one is planet gear, another one is ring gear. Three types of parts are there in this epicyclic gear box, or you can say epicyclic gear, single gear. So why this epicyclic gear having this planetary system? It is just looks like solar system. In center there is a sun, so there is a sun gear. Naming also come from that. Another, there is a planet which is revolves around the sun. So there is a small pinions of gear that are present attached to the central gear known as sun gear. And the outermost gear, small gear, which is rotate, is known as planetary gear. Next, this planet gear and sun gear get enclosed with another gear, is known as ring gear. All completely three, they are fixed with each other by means of carrier, as well as there is an input and output shaft. So this completely setup is known as epicyclic gear, which will be later will be discussed in these classes with the feasibility of video, animations, and the pictures. So let's move towards the further the systematic diagrams of this gear. What is the specialty? After that, we'll move towards the pictorial
representation of this, and also animation and the video of other classes are there in this later onwards. In this type of arrangement, what happened mainly, how the gear system work, mainly it is working like locking of three system, not simultaneously but in different part automatically. Means once of the gear sun is get locked, planet will be moved by means of the ring gear. Second locking system is ring gear get locked, other two gear will be rotate. Another one is planet gear will be locked, the ring and sun gear will be rotated. There is a three type of locking system, three type of speed we will get in just like in manual. When you go for propulsion, we are moving towards the fast gear, initial gear, propulsion gear, then second gear, third gear, fourth gear, or maybe the top gear. Some vehicles there is a fifth gear also, and also there is a reverse gear. We have to put that in the manually. But in this system where there is no manual system, you only control by means of accelerator to the vehicle. So what happened here, when there will be a automatically lock, the number of the torque and the speed of the vehicle also changes according to the locking system of the gear. They don't lock simultaneously at a time, they lock according to your need that you are getting in during the type of the propulsion of the vehicle. Okay? मतलब बहुत ही सिंपल चीज है, ये एक ऐसा गियर सिस्टम है जहां पे बीच में एक सॉन गियर होता है, उसके चारों तरफ छोटे छोटे पिनियन होते हैं जिसको हम प्लैनेट गियर कहते हैं. उसके बाद ये जो छोटे छोटे पिनियन और जो सन होता है उसको एनक्लोज करके एक गियर होता है, उसको रिंग गियर कहते हैं. ये सारे चीज एक शाफ्ट के ऊपर रहता है, उसको इनपुट शाफ्ट कहा जाता है, या उसको तुम कैरियर शाफ्ट कह सकते हो. वो इनपुट और आउटपुट शाफ्ट होता है. आफ्टर दैट वो इंडिविजुअली लॉक हो जाता है, सेपरेटली वो लॉक होते हैं. कभी कभी सॉन गियर लॉक होता है तो तुम डिफरेंट स्पीड पाते हो, टॉर्क पाते हो. प्लैनेट गियर लॉक होता है तो तुम डिफरेंट स्पीड पाते हो, लॉक पाते हो. अगर रिंग गियर लॉक हो जाता है तो तुम डिफरेंट स्पीड एंड टॉर्क पाते हो. लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जब एक गियर लॉक होता है, बाकी दो गियर जो है वो उसमें मूव करते हैं. तो साइमल्टेनियसली सारे गियर लॉक नहीं होते, या एक से ज्यादा गियर एक साथ लॉक नहीं होते. At a time there is a single gear to be locked in this system. Okay. Another thing याद रखना चाहिए कि ये जो एपिसाइक्लिक गियर सिस्टम है इसको कॉमनली प्लैनेटरी गियर सिस्टम भी कहा जाता है. इट इज अदरवाइज नोन एज द प्लैनेटरी गियर सिस्टम कॉमनली because it looks like a solar system model. Okay. So in the further we discover the applications, but now we are going for pictorial representations how this is working and the component in this. Okay. First of all, this is a ring gear. The outermost gear is known as ring gear, the larger part. Then the small part, it is a ring gear. Then small pinions are there, B and A. It is not mandatory that there is only two pinion. In the picture there is only two pinion. According to the need, according to the design of the vehicle, it may be more than two, more than three, four, whatever may be. Okay. But by means of picture there is a two for the understanding. It is not mandatory for that. There is in gear always there is a two pinion will be there. Okay. Last there is a central, there is a C, it is a sun gear. So in the central sun gear, after the sun gear there is a planet which is revolve around the sun gear, enclosed by the larger gear is the ring gear. The two shaft there is there. One is sun gear shaft, another one is planet carrier shaft or planet carrier. That means the two shaft which completely get support to this gear. One is sun gear shaft, it support to the sun gear and arrangement to that of planet gear. Another shaft is planet carrier shaft. In a planet carrier shaft, there is another arrangement known as planet carrier. In the planet carrier, it get linked with your small pinion or the known as the planet gear. So ये completely representation है पिक्चर का, जो कि एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स का है. ये सिंगल गियर का है. इस तरह अगर मोर नंबर ऑफ गियर आएगा वो सिस्टम हो जाएगा. वही चीज़ मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि डाउट मत रखना कि व्हीकल में एक ही गियर होगा. देयर इज मोर नंबर ऑफ दिस सिमिलर टाइप ऑफ गियर इज अरेंज्ड इन ए सिमेट्रिकल वे इन ए सिंगल शाफ्ट which produce different type of torque, and that is known as epicyclic gear system. So if you know about the single gear, it's similar to that. If number of gear are attached in a single shaft,
then it is a epicyclic gear system. There is no difference between this thing at all. No doubt between the epicyclic gear and the epicyclic gear system. Okay? So next, what I am telling to you about that, मैं ये बोल रहा था कि अगर सॉन गियर को आप फिक्स कर देंगे तो प्लैनेट गियर मूव करेगा, ओके, और रिंग गियर भी मूव करेगा. तो एक गियर फिक्स हुआ, दोनों मूव किए, वहां पे तुम एक टॉर्क पाओगे, वहां पे एक स्पीड पाओगे. अनदर, अगर प्लैनेट गियर फिक्स हो जाते हैं, सपोज प्लैनेट गियर अगर फिक्स हो जाते हैं, मतलब कैरियर, अगर प्लैनेट कैरियर सैप्ट अगर फिक्स हो जाते हैं, तो रिंग गियर और सॉन गियर मूव करेंगे, ओके, जो कि प्लैनेट गियर को टॉर्क देंगे मूव करने के लिए फोर्सफुली. क्योंकि अगर प्लैनेट गियर को आप स्टेशनरी बना देंगे तो सॉन गियर और रिंग गियर मूव नहीं कर सकते. लेकिन प्लैनेट गियर को अगर आप रेस्ट में लेंगे, वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे, तो सॉन गियर और रिंग गियर की जो टॉर्क है वो उनको ड्राइव करने के लिए हेल्प करेगा. ऑटोमेटिकली ये चीज, ये जो प्लैनेट गियर मूव करेंगे. ऐसा एक भी सिस्टम नहीं है जहां पे प्लैनेट गियर कंप्लीटली रेस्ट में आ जाता है. if there is a system of locking, if planet gear get rest completely, the gear will be not get work. It is impossible that if the planet gear is fixed permanently, then the ring gear, swan gear will not be get function, will not be get work by means of gear mechanism of interference of work. So यहाँ पे ये चीज ये है कि उसके बाद और एक लॉकिंग सिस्टम है जो कि रिंग गियर का है. अगर रिंग गियर को फिक्स किया जाए तो सॉन गियर मूव करते हैं और प्लैनेट गियर मूव करते हैं. ओके, दो चीज फिजिबल है. एक, रिंग गियर को फिक्स कर दो, सॉन गियर तो मूव करेगा, तो उसी के स्पीड की टॉर्क से प्लैनेट गियर भी मूव करेगा, ये फिजिबल है. अनदर चीज है कि सॉन गियर को फिक्स कर दो, ये मूव नहीं करेगा, तो रिंग गियर तो मूव करेगा, तो रिंग गियर की जो फोर्स ऑफ टॉर्क होगा उसी हिसाब से प्लैनेट गियर मूव करेगा. ये चीज फिजिबल होता है, मतलब रिंग गियर फिक्स होता है और सॉन गियर फिक्स होता है. लेकिन प्लैनेट गियर जो फिक्स होता है ना, वो सिर्फ एक ही चीज के लिए होता है, मतलब वो चीज फिक्स नहीं रहता. मतलब एक ही चीज याद रखना, ये मूव नहीं करेगा ऐसा नहीं होता है. इसको इसीलिए फिक्स माना गया क्योंकि थर्ड सिस्टम है. जस्ट अज्यूम टू गेट फिक्स बिकॉज यू गेट अनदर टाइप ऑफ ड्राइव ओवर हियर, विल बी डिस्कस इन द फर्दर. Okay, but in every locking system this planet gear is always moving. Okay? This is a complete pictorial representation of the epicyclic gear. Next, we are going to certain video. In this video you can able to understand the how it is working, whatever I discussed. Then we go for certain animation that how the different about drive that you obtain from this system. So let's watch this video. So in this video there is a planet gear or epicyclic gear, whatever may be. I already discussed that there is a planetary gear. I already discussed because it is just like solar system, so we can able to give another name. Commonly we are said that is a planetary gear system. So you just look the further part of this gear system in this video. Once there is a planet gear and the middle one is a sun gear. Wait. Yeah, this part. In this part, these four pinion are there. They are the planet gear. The central part, the central part is a sun gear. This one is a shaft, sun gear shaft, on which the sun gear get mounted. Okay, mounted and support by means of this planet gear. Okay? ये चार जो छोटे छोटे पिनियन होते हैं वो प्लैनेट गियर है, और बीच वाला जो गियर है वो सॉन गियर है. तो शाफ्ट है वो सॉन गियर शाफ्ट है, जिसके ऊपर सॉन गियर माउंट है, और उसके अटैच में चार पिनियन मतलब चार प्लैनेट गियर है. और जो अंदर आराम से देखो, ये जो प्लैनेट गियर यहाँ पे अटैच हुआ है, ये जो चीज अटैच हुआ है, ये जो टीथ दिखाई दे रहा है बाउंड्री में, इसको हम रिंग गियर कहेंगे. ओके, तो बाउंड्री में जो अटैच हुआ है दो गियर, दो टीथ है, जहाँ पे पिनियन जो छोटे छोटे प्लैनेट वहां पे अरेंजमेंट है, लॉक होके हैं, वो उसको हम कह सकते हैं रिंग गियर. Now go further.
Yeah, the here the swan gear is rotating, ring gear is get fixed. Okay, here all the three gears are rotating, but it is not the same thing as all the three gear rotating at the same time. Some things are get locked. It is just as animated video to get to watch. Yeah, this part. In the video, you can able to watch the central part is sun gear, planet gear is the outermost part. This one is rotating carrier, or you can say that the planet carrier. Rotating carrier or planet carrier is the internal gear or the ring gear. Internal gear or there is a ring gear. In this shaft is known as our sun shaft, sun gear shaft. Okay. Move further. Yeah, here they rotating. You can able to watch the ring gear is fixed over here. You can see here the ring gear is not moving. Okay, the sun gear and planet gear is moving. Here what happened? In the further slide, I will tell what happened, what type of the speed that you are getting, in comparison with the manual and the automatic system. Actually, a ring gear is a larger gear, having the more radius, the large radius. If there is a larger radius are there, it gives a more torque. Okay, so what's happened here? You will get the highest speed. Okay, when there is a ring gear, sun gear. Here the ring gear is fixed. This sun gear is rotating with this pinion. So first of all, which one is rotating? Sun gear is rotating. Size of sun gear and the pinion, it is just difference, but not very much difference. But sometimes the pinion gear is larger than sun gear. Sometimes the mainly maximum time the sun gear is larger, pinion is small. For certain arrangement, very in a exceptional case, certain the sun gear is smaller, just smaller than the planet gear. Okay, so in further I will tell what type of speed, what type of drive that you are getting by locking this. In this picture you just watch that in this ring gear is fixed, swan gear is rotating and pinion is rotating. Okay, यहाँ पे swan gear rotate कर रहा है, pinion वहां पे rotate कर रहे हैं, लेकिन जो ring gear है वो fix है. The nature how it is works. It is works like यहाँ पे पिनियन मतलब कैरियर पिनियन जो है वो मूव कर रहा है. ये जो कैरियर पिनियन सैप्ट है वो पिनियन के साथ कनेक्टेड है, और रिंग गियर के साथ जो प्लानिटरी गियर है वहां पे कनेक्टेड है, वो रोटेट कर रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे एक ड्राइव मिल रहा है. इस वीडियो में वहाँ कौन सा ड्राइव मिल रहा है वो नहीं है, वो फर्दर में कहूँगा कि कौन सी ड्राइव कौन सी चीज लॉक होने के बाद मिलता है. So here how it is rotating, the input shaft and output shaft that we are getting over here. This is the working principle how the gear is rotated inside your vehicle. Application go for it. Where the gear is applied, the turbojet engines, different type of vehicles, that is automatic vehicles in the wind turbines. This type of gear are arranged. This is the part of the wind turbines backward. The rear side the wind turbine, the epicyclic gear is working over here. This is all about the video. I repeat this video, just watch it again, then we'll move to further slide for explaining it. This one is a planetary gear, epicyclic gear. The outermost ring gear, central sun and the ring gear is fixed. The small pin is rotating, there is a carrier shaft. Here there is a close view of this three type of gear in a single epicyclic gear enclosed. After that, we are going to this small animated that sun gear, planet gear and internal gears or internal gears, ring gear rotating, carrier gears. Here the ring gear is fixed, sun gear and planet gear is rotating. After that, we go for the working principle, how it is works. Here we are going to get output part when the sun gear is fixed and the carrier gear is moving. That is the ring gear that you are watching over it. Carrier gear is rotating with the planetary ring gear or small pinion, and we are getting the output speed or output torque. This is a simple application of the epicyclic gear. Next, we will go for the application of this part.
This type of gear is applied in different type of today's generations vehicles which are going up for automatically transmission. जिस व्हीकल का गियर सिस्टम नहीं होगा मैनुअली क्लॉज नहीं होगा, आप देख के जान लेंगे कि वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वहाँ पे एपीसाइक्लिक गियर ही लगा हुआ है। उसके बाद ये जो चीज़ है वो विंड टर्बाइन के पीछे का चीज़ है, वो भी एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन की एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट वी विल मूव टू our different type of speed is obtaining by locking different things. So what are they? In this gear mechanism, I already told in the initially that this is a single gear, all I discussed, but here the in anime 1 you can watch, this is not a single gear, that is a 2 gear, it gets fixed with a single shaft. Okay, this is the practical arrangement of the gear in the vehicle. इज अ प्रैक्टिकल अरेंजमेंट। किसी भी व्हीकल में एक गियर नहीं होता है, एपिसाइक्लिक गियर की एक गियर नहीं होता, वहां पे गियर सिस्टम होता है। उस गियर सिस्टम जो होता है उसमें यहाँ पे 2 गियर है, तो ये भी एक गियर सिस्टम हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 एपिसाइक्लिक गियर है। अकॉर्डिंग टू नीड यहाँ पे 3-4 भी हो सकता है। जे टॉर्बाइंस में और जो विंड टॉर्बाइंस है वहां पे 3-4 होता है। ओके, 3-4 बड़े बड़े गियर्स होते हैं एपिसाइक्लिक गियर्स। इस सभी को हम कंबाइनली कह सकते हैं कि एपिसाइक्लिक गियर सिस्टम। सो ये एनिमी 1 में है कि दिस इज अ प्रैक्टिकल डिजाइन एंड एप्लीकेशन इन आवर डे टू डे लाइफ अप्लाइड इन द इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट इन एनिमी 2 इज इंपॉर्टेंट हाउ इट इज वर्किंग। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि पहले जो सॉन गियर मूव कर रहा है, यहाँ पे 3 चीज है। पहली चीज है कि ये जो चीज रिंग गियर फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ये 3 चीज का है। 3 चीज मतलब बहुत ही जल्दी ये एनिमेटेड हो रहा है। 3 टाइप ऑफ लॉकिंग यहाँ पे एक ही साथ है, लेकिन उसके पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद ये यहाँ पे आऊंगा। तो जस्ट लुक टू एनिमी 4 that here this sawn gear is get fixed. Okay, here there is a sawn gear is fixed, the planet gear is rotating and the ring gear is rotating. Okay, in anime 4 what's happened, when there the sawn gear get locked, at that time the ring gear is rotating with the planet gear rotating. Here which type of drive there you are getting? You are getting high speed drive. Okay, here we are getting high speed drive. High speed drive means, just if you compare with manual system, when in the manual system you are putting the gear of 2-3 top gear like that for the maximum speed. At that times what happened, this type of, in this system we are getting the speed, higher speed, when the sawn gear gets fixed and the ring gear is rotating with the planet gear. Because ring gear is larger dia, the larger dia means the ring gear is rotating, that means planet gear is rotating very fastly, because planet gear size or the gear is very much less with compared to the ring gear. So sawn gear is already fixed over here. So in this part, when the sawn gear is fixed, you are getting the high speed of the drive. Similarly, here you can say the ring gear is fixed. In anime 3, the ring gear is fixed, sawn gear is rotating. Here we are getting low speed drive. Okay, here we are going to getting the low speed drive. Low speed drive means when you require the more number of torque. Okay, compared to manual, when you put the fast gear at a very slow speed, you getting the high torque at the very low gear or fast gear or second gear. Is similar to that of this automatic gear system, when sawn gear is rotating with the pinion and the ring gear is get fixed. At last, in this anime 2, there is a 3 system at a time is visible over here. First, the sawn gear is rotating, ring gear is fixed, the pinion is the ring, the planet gear is moving forward. Then the ring gear is fixed, the sawn gear is rotating. There is a second type of gear you're getting. Another most important here, why the anime 2 is there, reverse gear mechanism. For only one thing, reverse gear mechanism. You can able to watch very clearly about this anime 4, that getting the high speed as sawn gear is fixed, ring gear is rotating and planet gear rotating. In anime 3, that there is getting the high torque, less speed, sawn gear is rotating,
planet gear rotating, but the ring gear is fixed. But here in anime 2, there is a reverse gear system. In the reverse gear system what happen, अगर आप ये पूछेंगे कि अगर टू व्हीलर में रिवर्स गियर नहीं है, टू व्हीलर में रिवर्स गियर दिया ही नहीं गया है, तो कि टू व्हीलर में रिवर्स गियर का कोई इतना भी जरूरत नहीं है, फोर व्हीलर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आप रिवर्स गियर पा सकते हैं. ओके, तो टू व्हीलर में इसीलिए नहीं दिया गया, इसका एक ही रीजन है, टू व्हीलर को आप अपने ही फिजिकल फोर्स से आप पीछे ले सकते हैं. अगर वहां पे आप उसका एक ट्रांसमिशन लगाएंगे, अगर इस सिस्टम को वहां पे लॉक करके रिवर्स गियर डालेंगे, तो उसमें एक प्रॉब्लम होगा कि आपका जो माइलेज है वो कमेगा, क्योंकि वहां पे जो एक्टिविटी होगा उसके लिए टू व्हीलर की जो माइलेज है वो थोड़ा कम हो जाएगा. इसी कारण टू व्हीलर को जितना सिंपल हो सकता है उसका सिंपल बना दिया जाता है, क्योंकि टू व्हीलर की सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि it is a family purpose and money economically very beneficial should be there, and also it is very feasible for the riding for that purposes, and mileage should be very high with a less number of money should be get waste with the very low volume of the petrol. That is the main objective of the two wheeler. Okay, but in the four wheeler automatic drive transmission you will definitely get this reverse system. Okay, this reverse system. So what we will get in the four-wheeler drive, how become the reverse? There is no clutch plate are there. There is only three system of there to put the gear. One is propeller P in automatic, one is N neutral, another one is R reverse. If you put the bottom to P, you can put the P, at the time what a propulsion takes place. That means vehicle will be forward moving. That means is anime 4 and anime 3 both, anime 4 and anime 3 both, these both are just like propulsion when you put the vehicle at the P. When it become neutral, at that time it will only moving but not get power transmission to the back wheel. It will all be moving, but power not get transmitted to the back wheel is the neutral condition. But at last, when there is a reverse gear, anime 2 come into the place. Okay? In anime 2, what happened? The carrier, this carrier shaft get fixed. It is very small interval of time period. It is just move forwarded. You just look, there is a orange color marking of arrow mark towards the ring gear. That means here the ring gear is moving towards the suppose in this clockwise direction, the planet gear moving in the anti-clockwise direction. Okay, and also it is gets spinning. That means in this, when the carrier, remember one thing, when the carrier shaft or the carrier part is get fixed, at that time you will get a reverse gear system in this automatic gear system. So in this four type of anime is very important in the gear mechanism epicyclic, how the epicyclic gear system is work. तो पहला चीज में क्या कहा, ये प्रैक्टिकल फिजिबल डिजाइन है जो कि ऑटोमोबाइल में है, वहां पे 2 एपिसाइक्लिक गियर लगा गया है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3, 4, 5 वो डिजाइन के हिसाब से आएगा, लगाया जाएगा. ये फिजिबल प्रैक्टिकल डिजाइन है एनिमी 1 में. एनिमी 4 में क्या है, तुम अगर प्रोपल्सन करोगे और हाई स्पीड चाहिए, एक्सीलरेटर को तुम हाई स्पीड में रख रहे हो, तो एनिमी 4 है, वहां पे जो रिंग गियर मूव कर रहा है एंड जो पिनियन है वो मूव कर रहे हैं प्लानेटरी गियर, लेकिन वो सॉन गियर जो है वो फिक्स है. अब रिंग गियर सबसे बड़ा गियर है, उसके रेडियस बहुत बड़ा है, तो उसका टॉर्क, उसका स्पीड बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए रिंग गियर बहुत जोर से मूव करेगा, इसमें आप स्पीड ज्यादा पाएंगे. उसके बाद एनिमी 3 में आए हो, एनिमी 3 में आप पाएंगे टॉर्क ज्यादा, स्पीड कम, क्योंकि यहाँ पे रिंग गियर फिक्स हो चुका है और सॉन गियर मूव कर रहा है प्लानेट गियर के साथ. तो सॉन गियर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, स्पीड कम होगा, तो ये एनिमी 3 में है. एनिमी 2 में तुम्हारे रिवर्स गियर सिस्टम में व्हेन द कैरियर शाफ्ट जो है, कैरियर प्लानेटरी शाफ्ट जब फिक्स हो जाता है, तो रिंग गियर और जो प्लैनेट गियर है वो ऑपोजिटली मूव करते हैं. ओके, एंड प्लैनेट गियर उसी के अंदर स्पिन भी करता है, मतलब फॉरवर्ड भी मूव करेगा, स्पिन करेगा, उसके बाद कैरियर शाफ्ट उसको फिक्स करेगा. जब ये चीज मूव करेगा, रिंग गियर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो क्या होगा ना, पहली चीज क्या है ना,
एक चीज तुम्हें क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, उसके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज आउटपुट मिल रहा है। मतलब इनपुट तुम क्लॉकवाइज दे रहे हो, लेकिन आउटपुट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। जब आउटपुट एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, वो चीज ड्राइव होकर चला जाएगा पीछे व्हील को, मतलब रियर व्हील को, वहां पे तुम्हारी गाड़ी रियर बैक आएगा। ये एनिमी 2 में है, द रिवर्स गियर सिस्टम। यहाँ पे एक्चुअली 3 गियर है, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे वो चेंज हो रहा है, तो पर्टिकुलर वहां कौन सी चीज में हो रहा है देखना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन याद रखना इतना है कि कैरियर साहब जब फिक्स हो जाता है तब वो रिवर्स गियर मिलता है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एडवांटेज ऑफ एपिसाइक्लिक गियर। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस एपिसाइक्लिक गियर। आप सब कुछ पढ़ ले, लेकिन उसके बाद उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, एवरीथिंग हैविंग द एडवांटेज डिसएडवांटेज। There is not a single thing there which not have any disadvantage, but the main important is that if the disadvantage is much more higher that we cannot able to manage it, compensate it, then it is not for good for our design point of view and for society point of view, for the application that is get rejected from the mainly prototype or going to get in the market. But when the advantage is more and disadvantage is very less, and that disadvantage is manageable, then it is accepted in the society by means of design. Also it get accepted, and also is go forward the patent and patent for the recognitions, and then further towards the design part to the for the society peoples or for us. So now what are the advantages of epicyclic gear is that it transfer greater amount of torque. It will transfer much amount of torque. The torque will be very high over here. अगर आप ये देख सकते हैं कि कंपेयर करेंगे, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल लाइक स्कूटी जो मतलब बाइक को आप देखेंगे, टॉर्क ज़्यादा ट्रांसफ़र अगर स्कूटी में आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा। फॉर एग्जांपल स्कूटी तो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इसका अच्छा एग्जांपल होगा तो आप ये देख सकते हैं कि मैक्स 100 जो लूना होता है, ओके, वो भी उसका कोई गियर नहीं होता। मैक्स 100 जो लूना होता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉगेज कैरी के लिए यूज किया जाता है। उसका टॉर्क सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो बनाया गया है ऐसे कि वो ट्रांसफर करेगा गुड्स। ओके, तो उसका जो टॉर्क है बहुत ही ज्यादा है, वो भी उस टाइप का चीज है, उसमें कोई गियर सिस्टम ज्यादा नहीं होता है। ओके, लेकिन इफ यू कंपेयर टू नॉर्मल आवर व्हीकल विल नॉट take so much about torque is compared to this automatic gear transmission compared to manual. Then go for the pure vibration compared to other gear train. यहाँ पे कोई complicated gear system नहीं है, ये बहुत ही compact है, बहुत ही छोटा सा चीज है। ये देखने में यहाँ पे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिजिकली प्रैक्टिकली बहुत ही छोटा गियर सिस्टम है। तो कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन इतना नहीं है, तो इसमें क्या है ना, वियर टियर ज्यादा नहीं होगा, वाइब्रेशन ज्यादा नहीं होता है एज कंपेयर टू मैनुअल। इसी कारण इसका एफिशिएंसी ज्यादा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है इसमें, हायर बियरिंग रोड्स, कांस्टेंट लुब्रिकेशन तो हर गियर की होती है, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है जो कांस्टेंट लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट्स, द कांस्टेंट लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट जो है वो एक्चुअली डिसएडवांटेज नहीं है। मतलब ये सभी गियर को चाहिए, सिर्फ गियर नहीं, एवरी मैकेनिकल कंपोनेंट्स व्हिच आर वर्किंग ऑन द मींस ऑफ रोटेटिंग कंपोनेंट्स, दे need the lubrication for the reduction of the friction and to reduce the wear and tear. It is not that type of disadvantage. अगर हर चीज का एक ही डिसएडवांटेज है तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस डिसएडवांटेज नहीं है, तो हर चीज के लिए यूज किया जाता है, तो ये मिनिमाइज है, मतलब यू कैन एक्सेप्ट इट। डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी ये इतना ज्यादा डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे मैनुअल में हर एक गियर के लिए छोटा पिनियन बड़ा को घुमाएगा, बड़ा पिनियन नीचे को घुमाएगा, ट्रांसमिशन शाफ्ट होगा, प्रोपेलर शाफ्ट होगा, वहां पे ट्रांसमिशन गियर आप डालेंगे, ईच एंड एवरी गियर आप डालते हैं अगर एक, इसीलिए ज्यादा वियर टियर होता है। एवरी टाइम यू आर फिक्सिंग द स्मॉल पिनियन टू लार्जर पिनियन टू स्मॉल पिनियन। एक टेस्टनरी होता है, एक प्रोपेलेशन पार्ट और ट्रांसमिशन पार्ट होता है जो क्रैंक शाफ्ट लो लेके इंजन की पावर लेके आता है। वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस से, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम आप गियर चेंज कर रहे हैं, तो वियर टियर ज्यादा हो रहा है। तो डिजाइन ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मैनुअल में है, कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक में। ओके, सो इट इज ऑल्सो मिनिमाइज। हायर बियरिंग लोड्स का मतलब ये कि अगर इसके ऊपर ज्यादा
लोड दिया जाता है अगर एक इंजन के ऊपर, मतलब सॉरी फॉर दैट पर्पज, सॉरी इंजन नहीं, मतलब इस गियर के ऊपर लोड दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहता हूँ कि अगर व्हीकल में बहुत ही ज़्यादा लोड हुआ, आपको लगेगा कि छोटा सा गियर ये टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताया कि विंड टर्बाइंस में यूज किया जाता है, ये जेट propulsion इंजन में कभी कभी कहाँ पे भी यूज किया जाता है जेट propulsion इंजन में। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड व्हीकल जो होता है, जो भी आप F1 रेस मतलब F1 रेस में तो गियर डाला जाता है, लेकिन वो उस टाइप का मैनुअल गियर नहीं है जो आप डाल रहे हैं। F1 रेसेस जो कार होते हैं, जो भी लेटेस्ट मॉडल में कार आ रहा है, जो हाई स्पीड कार होते हैं, वो सभी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में होता है। तो वहां पे जो बियरिंग लोड्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे से कैरी कर लेता है। ओके, वो इतना जल्दी टूटता नहीं है अगर व्हीकल इज गोइंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग वेरिएशन। So it is all about a disadvantage which is also can minimize. For that purpose, it is get accepted in the in today's society, and in the further it is also get developed by smoothly for the need according to the society peoples. So up to it for today's class, we are all discussing about the epicyclic gear system and comparison of manual and epicyclic gear system. What are the parts of epicyclic gear system with the animated videos and animated graphics that we are discuss about what are the different locking system and in which we can able to get different type of speed, how it is get compared with similar to the manual system, and at last advantage and disadvantage. I hope that you understand better, and further in the next classes I will come with another interesting classes of the transmission system part, another gear system part which is in the syllabus of this B.tech. So up to it, stay tuned, and thank you very much. Have a good day.